Good morning, student. Today we are going to learn about converse, inverse, and contrapositive of statement. Now, basically, this question comes for 3 to 4 marks. If only 2 is expected out of any 3, that is converse, inverse, contrapositive में से अगर सिर्फ 2 ही expected है तो it will come for 2 marks. And if they are asking for converse, inverse, and contrapositive all 3, then the question can come for 3 marks. The recent board exam mein, this type of question came for 3 marks. And this is very easy. For this to understand, you need to understand the symbolic form. So let's start with the symbolic form. Now the first statement which will be given to you in your exam paper, that will be in a form of a conditional statement. Now suppose the first statement we are taking P and the second statement is Q. That means P implies Q. In short, if P, then Q. This type of statement will be given to you. And you will have to convert this conditional statement into converse, inverse, and contrapositive. Now, to start with the converse, you have to just swap. That means P and Q will be swapped. So the first statement will be Q and the second statement will be P. That means if Q, then P. Now in inverse, whatever conditional statement is there, that you will write as it is, but उसमें आप क्या ऐड करोगे तो not को ऐड करोगे, यानी कि if not P then not Q. Same thing is applicable to contrapositive. आपका जो कन्वर्स स्टेटमेंट रहेगा वो एज इट इज लिखोगे, लेकिन आपको उसमें नॉट को ऐड करना पड़ेगा. ओके, सो इफ नॉट क्यू देन नॉट पी. बट अगर सपोज किसी स्टेटमेंट में ऑलरेडी नॉट दिया हुआ है, दैट मीन्स ऑलरेडी वो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो देन दैट इन दैट केस इट विल बिकम पॉजिटिव. एंड इफ ऑलरेडी इट इज इन पॉजिटिव फॉर्म तो इट विल बिकम नेगेटिव. लेट्स टेक वन एग्जांपल. फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिसमैन देन ऑनेस्ट. सबसे पहले हम लोग P एंड Q में उसको कन्वर्ट कर देते. सो आपका इफ देन एज इट इज रहेगा एंड योर फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज P विल बी पुलिसमैन एंड Q विल बी ऑनेस्ट. अब ये ऑलरेडी कंडीशनल फॉर्म में दिया हुआ है. नाउ द कन्वर्स, Q implies P. Now Q implies P. The way I said, आप इफ देन को एज इट इज रखोगे. कन्वर्स करते वक्त आपको ओरिजिनल स्टेटमेंट यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट को स्वैप करना है. तो ये आएगा इफ ऑनेस्ट देन पुलिसमैन. नाउ इनवर्स, द वे आई सेड, इनवर्स में आपको क्या करना है, आपका कंडीशनल ऑलरेडी दिया हुआ है, वो एज इट इज लिखना है, लेकिन उसमें नॉट को ऐड करना है, यानी कि इफ नॉट पुलिसमैन देन नॉट ऑनेस्ट. नाउ कॉन्ट्रापॉजिटिव सिंबॉलिक फॉर्म जैसे आपको बता रहा है कि नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी, यानी कि आपका जो कन्वर्स है वो एज इट इज लिखना है और उसमें नॉट ऐड करना है, यानी कि इफ नॉट ऑनेस्ट देन नॉट पुलिसमैन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. नाउ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वी विल टेक सम मोर एग्जाम्पल. Write the converse, inverse, and contrapositive of the following statement. If a function is differentiable, then it is continuous. अब आपको क्या करना है, if then as it is रखना है. A function is differentiable will become P and it is continuous, ये बन जाएगा Q. देखिए सॉल्यूशन में P है आपका a function is differentiable and Q है a function is continuous. Now therefore the given statement becomes a conditional statement, that is P implies Q. अब आपको सबसे पहले लिखना है कन्वर्स. कन्वर्स में जैसे मैंने आपको पहले बोला कि आपको स्वैपिंग करना है, यानी कि your Q will become first statement and P will become second statement. So Q implies P. So if a function is continuous, आपका Q पहले आएगा, Q है function is continuous. So if a function is continuous, then it is differentiable. Inverse, the way I said earlier, आपका जो conditional statement है that will come as it is. Only the difference is कि उसमें not add हो जाएगा.
यानी कि इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूस। देख सकते हैं आप कंडीशनल स्टेटमेंट एज इट इज आया है सिर्फ यहाँ पे अ फंक्शन, इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूस। Now contrapositive. Now what you will do in contrapositive, you will write the converse statement as it is, but you will add not in that. That means if a function is continuous की जगह पे, if a function is not continuous, then it is differentiable की जगह पे, then it is not differentiable. Let me explain once again. Conditional statement is P implies Q. Converse में swapping will take place, Q will come first and P will become second. But if then का position change नहीं होगा, that will remain as it is. Then in inverse statement, whatever your conditional statement is there, उसमें not add हो जाएगा. तो आपका conditional statement है P implies Q, तो उसमें आएगा not. That is negation P implies negation Q. देन कॉन्ट्रापोजिटिव जो आपका कन्वर्स है वो एज इट इज होगा लेकिन उसमें नॉट ऐड हो जाएगा यानी कि निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. क्वेश्चन है इफ इट रेन्स देन द मैच विल बी कैंसल्ड. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इट रेन्स की जगह पे पी लिखेंगे, द मैच विल बी कैंसल्ड की जगह पे क्यू लिखेंगे. नाउ गिवन स्टेटमेंट है आपका P implies Q. कन्वर्स क्या होगा, Q will come first, P will become second. यानी कि if the match gets cancelled, then it rains. Okay. Next, inverse. Now, what will happen in inverse statement? Your conditional will remain as it is. सिर्फ उसमें क्या ऐड हो जाएगा, not ऐड हो जाएगा. आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है इफ इट रेन्स देन द मैच विल बी कैंसल्ड, तो इसमें नॉट को ऐड कर देते हैं. दैट मींस इफ इट, अब यहाँ पे रेन्स है, फॉर दैट पर्पस यहाँ पे डज नॉट आएगा और रेन्स का एस निकल जाएगा. सो इफ इट डज नॉट रेन देन द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड. नाउ इन कॉन्ट्रापोजिटिव कन्वर्स में का निगेशन आएगा, दैट मींस कन्वर्स में नॉट ऐड कर दो. If the match does not get cancelled, या फिर if the match is not cancelled, then it does not rain. Got it? I hope you understood this. अगर आपको ये समझ में आ गया है तो this is a homework for you. Write converse, inverse and contrapositive of the following statement. पहला है if x less than y, then x square less than y square. Then a family becomes literate if woman in it is literate. If surface area decreases, then the pressure increases. If voltage increases, then the current decreases. तो आपको ये homework करना है and if you have any doubt, you will get back to me. Now, the next part which we are going to learn, that is a truth table. Now, what we will do in this truth table, ट्रूथ टेबल लर्न करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले लर्न करना होगा कि हाउ टू पुट द TNF वैल्यूज. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंजंक्शन से.